We are here to talk about CX, which is customer experience, and that is very specific for manufacturing and supply chain industry. This is a very small, very niche cohort of not more than, in our expectation, 25-30 people जो सिर्फ इसी इंडस्ट्री के हैं, people who want to understand कि manufacturing and supply chain. I think for us marketers at least, one of the things जो market में सामने दिखती ही नहीं है. For the regular consumer, manufacturing is something that is the least known to them. Supply chain, I think even lesser. So वहाँ पे CX, वहाँ पे customer experience, engagement, how does that function? क्या उसके nuances हैं? We'll talk about all of that. To introduce my speakers for today, I have Mr. Arpan Basu from Gibraltar Air Springs. So he's the director of product and marketing at Gibraltar. And then I have Shivam Dikshit, who is the director of enterprise sales and strategic alliances at MyOperator. The next guest who is just joining is Deepak Kohli, who leads customer success at LocoNav, a supply chain company. So we have people from manufacturing who have been doing this for more than a couple of decades now. Then we have Shivam here, who is the service provider in all of this. And then we have Deepak from LocoNav, who is into supply chain and management of sorts. So we'll get started from there. I'll just check with Deepak. Deepak, if you can hear me and if you can turn on your video, we'll be able to hear you. I really hope Deepak has joined. I can see that. Yeah. Deepak, if you please would think you are unmuted, but if you can speak something, so we'll get to know. Actually, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है. कुछ प्रॉब्लम आई थिंक वेकेंट. अच्छा. All right. Okay. All right. So just give me 1 second, then I'll enable non-video as well, so that at least we know that you're there. More importantly. Okay, so we have the poll as well. I'll end the poll. We'll publish the results. I think the results should be visible to you, Arpan, Shivam, Yeah, Deepak. Yeah, absolutely. you can see the share of the audience. Audience किस mindset से है यहाँ पे? Call and Right. WhatsApp काफी सारे लोग हैं. SMS, email is still considerable, more than 25-30%. And then we have others as well, Google Meets and all. So that's why. ठीक है जी. चलो, let's begin with our very initial questions. I would love to start with Arpan sir, you. And for the sake of our audience, I'm just assuming that the audience will likely understand a mix of Hindi and English. So we'll try to maintain both of them. थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा उधर. Otherwise, I'm pretty sure soon enough we'll start getting in chat कि सर थोड़ा सा हिंदी में बताएं please क्या कह रहे हैं आप. No problem. Large Well, audience is that way. But yeah, but to get started, let me just jump straight to the point कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एज आई सेड, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर से बहुत बहुत दूर है आप लोग. हमें पता ही नहीं है कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है. एक एवरेज आई थिंक पर्सन ने, इंडियन भी छोड़िए, उसने कोई फैक्ट्री विजिट ही नहीं करी होती अपने लाइफ टाइम में एट अ लार्ज स्केल. आई मीन वी ऑल ड्रेड गोइंग टू इंडस्ट्रियल एरिया कि कौन जाएगा वहां पे. इट्स लाइक नॉट मेंट फॉर अस. सो इन टर्म्स ऑफ सीएक्स, कस्टमर एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में क्या मायने रखता है, क्या उसके आयाम है, and more importantly, what are the challenges that exist? Great. Thanks, Sanat, for the introduction, and very relevant. आप जो बोले हो. See, it's like this. We are into manufacturing of industrial product, which are mainly used in buses, trucks, trailers, in paper mills, in cement plants, in aluminium foundries, and railway applications also. So these are called air springs, so which are essentially rubber balloons, which are fitted in the suspension. That's why when you travel in a Volvo bus, you don't feel the vibration. So we are first one in India to start manufacturing this. And as of now, in India, there are only 2 companies, including us, who are manufacturing. And globally, there are only 11 companies who are manufacturing this product. This is a highly technical product, I would say. I'm working with this product for last 20 years, and I worked in US, in Germany, in Spain, and then in China before starting the manufacturing operations over here. Now, all through, I realized, as you rightly said,
industrial belt, industrial area, and manufacturing industries are little, off the normal hardcore business line. So if somebody talks about, something like a shopping mall coming up, लोग बोलेंगे ठीक है भाई उनका एक फूड कोर्ट में स्टॉल दिया हुआ है, उनका कुछ तो बिजनेस चल रहा है. बट आप जब बोलेंगे इस बंदे का एक लोहे का कुछ फैब्रिकेशन वर्कशॉप है या कुछ प्रोडक्ट्स बनाने का कारखाना है, who knows, उस पे उनका खुद का फैमिली कभी आता नहीं है, तो बाकी तो छोड़ ही दो. So that is how it is. Truly speaking, when it comes to customer experience, it's extremely important for manufacturing companies like us, because for a company like I would say Shopper Stop, customers experience क्या है, जो बंदा वो गेट से अंदर गया, वहां से एयर कंडीशनिंग से शुरू करके हर एक जो भी वहां खड़े हैं उनको ग्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, आप आके हमारा ड्रेस देख लीजिए, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, एवरीबॉडी ट्राइंग टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट. उनका ओवरऑल लुक एंड फील एक बहुत बड़ा चीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग में अपना फैमिली मेंबर कभी आता नहीं विश्वकर्मा पूजा छोड़ के, तो कस्टमर तो आप भूल ही जाओ. सो at the end of the day, when a customer के साथ आपको इंटरेक्ट तो करना है, देखिए आप तो चांद में बैठ के काम नहीं कर रहे हो, आप इसी धरती पे हो. So at the end of the day, you have to connect with your customer. So let's start from where I get the first call from my customer. And when I say, when a lead is generated, whether it's in an exhibition or from any website या कुछ भी चीज देख के customer हमको email करते हैं, I would say 40% of the customer emails us and 60% of our customer calls us. For a product of our kind, still as of today, calling is very, very relevant. तो इसी वजह से इससे पहले हम लोग बहुत कॉल रिसीव करते थे. काफी टाइम अगर यूएस से कॉल आ रहा है या यूरोप से कॉल आ रहा है, काफी टाइम वो टाइम डिफरेंस के वजह से कॉल मिस भी हो जाता था. एंड बोर्ड लाइन में कॉल आए तो रात को कोई रहता नहीं था, तो कॉल कहाँ से आया था वो रिकॉर्ड भी नहीं होता. So we used to miss out on lot of leads. So that is how it used to be. Then we used to get back to them. अगर हमको वो मिल जाता था तो कि सर आपने कल फोन किया था, पर जब हम कॉल कर रहे हैं हो सकता है तब वो नींद पे है या वो रेस्ट कर रहे हैं या गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं. So that was again a problem. So it was difficult to have real-time board number accessible at all times. Mobile number को मैं board number कर नहीं सकता due to whatever problems. We are a team of 250 people. So हमारे कंपनी में टोटल हम लोग 250 people काम कर रहे हैं. And we have grown very fast. We have started the manufacturing just 11 years back. And as of today, I mean, we started with 6-8 people. We are 250 people today. And ये growth के पीछे customer experience is the key. They have been able to connect to us. We have been able to solve a lot of mysteries and barriers which were there in between. तब जाके आज का तारीख में customer हमको call करते हैं and they get to talk to one of our channel partners. हमारा ही employees में से कोई होता है जिसके पास कॉल आता है, एंड वो बंदा अगर कॉल भूल से मिस भी कर जाए तो वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाता है उसके अपर स्ट्रीम में जो बैठा हुआ है. अगर वो भी मिस कर जाए तो फाइनली इट कम्स टू मी एंड आई ऑफन टेक द कॉल सेइंग हेलो जिब्राल्टर. तो वहां से आवाज आता है कि मे आई नो हु एम आई टॉकिंग टू. आई से आई एम द रिसेप्शनिस्ट, आप आगे बताइए. Okay. So I have to give him an experience of he's called a company, not a person. So if he gets to hear that he's talking to the director, to the top man directly, then automatically the experience changes. वो हमको करना ही नहीं है. We have to take them through a proper professional channel and we recreate this.
So that is what we do after we started using MyOperator for last 3-4 years, 4 years almost. Yeah, during COVID, शायद हम चालू किए थे. I don't remember. Fabulous. Fabulous. But that's actually a very good point जो आपने बोला ना. Usually लोग सोचेंगे कि हाँ आपके पास फोन है तो you say yes I'm the director speaking. But you said कि अच्छा receptionist बन के, which is very important. The whole journey, the experience, the story building of the customer. कि he called a company, not a person, is I think one takeaway that everybody in this session today should take home from here. When we talk of journeys, also I'll come to Deepak now. Ki LocoNav is all about, I think, journeys, supply chain, movement of trucks and vehicles from one point to another. So Deepak to is in this industry and already dealing with this. Deepak, please shed some light on like in the supply chain part. Again, something very, very unknown to regular people. कि क्या होता है सप्लाई चेन में, कैसा अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पोर्टर एंड स्विगी एंड जोमैटो डिलीवरी पीपल or maybe at max delivery or DHL, we just know the names, we don't know what happens in the back end. We have seen their warehouses somewhere where we don't have access. So do let us know कि for you customer experience किस तरह काम करता है, because आप बीच में हो. You're also talking to the manufacturers like Arpan ji, you're also speaking to people like us जिनको आप सामान पहुंचा रहे हो. So how is CX working for you? थैंक यू सर. एक्चुअली मैं लोकल में पिछले 5 साल से सर्विस में हूँ एंड मैं कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ. सो मेरा जो लोकल है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, कि अपने जो बड़े बड़े फ्लीट्स मैनेजर्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी गाड़ी को ट्रैक करना. एंड आजकल जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको जीपीएस के बिना वो गाड़ी रन नहीं कर सकते अपना. कई जगह तो ये कई स्टेट्स में जीपीएस मैंडेटरी है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए. सो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए अपनी गाड़ी को ट्रैक इजीली करते हैं, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर्स की वो हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टूड करके उनको वहाँ पे उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं लोकल ऐप. एंड इसके अलावा जो माई ऑपरेटर का पार्ट है इसमें जो हमने जो माई ऑपरेटर हम लोकल ऐप में कुछ डिपार्टमेंट्स में यूज कर रहे हैं. जैसे एक कस्टमर एक्सपीरियंस मेन है, इसमें होता है कि हमें जब भी हमारे जो कस्टमर उतने ट्रेवल करते हैं वो किसी एक स्पोक, जैसे सर ने बताया अभी सर ने कि वो किसी एक स्पोक को रीच नहीं कर सकते, माइट भी वो कॉल आंसर करे ना करे. सो उसमें जो माई ऑपरेटर का रोल क्या आता है, कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ, मैंने कॉल किया एक कस्टमर, उसमें अगर कस्टमर सामने वाला बंदा अनअवेलेबल है तो बाद में वो मिस कॉल्स में या उसकी कॉल कॉल्स में उसकी हिस्ट्री आ जाती है. सो ऑन द नेक्स्ट डे जो भी स्पोक होगा बंदे लाइन में वो उसको रीच कर लेंगे. सर आपने कॉल किया था फलाने दिन एंड इस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स थी. सो हम उनको एसएमएस, जो हमारी एसएमएस फैसिलिटी है उनको भी एसएमएस के थ्रू नोन करते हैं कि आपने कॉल किया था इस टाइम पे, लोगों ने आपको क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम रीच करते हैं इनके थ्रू. सो लोकोनैप जो यूज कर रहा है माई ऑपरेटर को मोस्टली कस्टमर एक्सपीरियंस के रूप में यूज कर रहे हैं. और अभी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट वैसे मैं हूँ भी नहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, मैं कस्टमर एक्सपीरियंस में हूँ. सो उसके बारे में सॉरी मैं कुछ इतना एक्स्ट्रा बता नहीं पाऊंगा आपको. So this is good. मतलब the fact is कि end of the day we realize कि eventually call transferring and the inability to pick up the call is I think omnipresent. I was speaking to somebody yesterday also कि सर मेरे पास ना इतना फोन आता है कि मैं आपसे भी बात नहीं कर पा रहा हूँ to come and meet me. So when I'm the solution provider and the person cannot even talk to me, so I realized that these problems exist from very ground level. I was talking to a offset printer in Lucknow. I mean, you imagine Lucknow tier 2 and then offset printing again, comparatively a smaller industry. Usme bhi people are facing this problem, and then go as high as Gibraltar for that matter. You're still facing that, and then you solved it with something like MyOperator. I think Shivam, MyOperator is the common factor here. So couple of things then. We know the problem statements ki CX में, this is where if I were to sum it up from what Deepak and Arpan said, कि end of the day the problem comes in whenever the customer is approaching you. उसको वहां पे first point of contact पे ना story अच्छी मिलनी चाहिए. That is where everything depends. उसके आगे पीछे तो सब आगे बातें आप बना लोगे, but वो first point of contact अच्छा होना चाहिए. How does my operator help in this? And do mention things about WhatsApp, because I think call is one aspect जो लोगों ने highlight किया they are using.
The other one was WhatsApp that people are actively using in our audience today. Mm-hmm. So, thank you, Sanat. Thank you for the question. So, listening to both Arpan and Deepak, manufacturing और supply chain, मतलब दोनों एक तरीके से intersecting industries हैं, but दोनों के challenges and the problems that they face in CX is a bit different. So, what I gauged from Arpan's dialogue was that कि अभी जो challenge ये face कर रहे थे वो disconnected systems का challenge face कर रहे थे, timings के issues थे, availability staff की, and probably इसी को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो लेट्स से लैंग्वेज के बैरियर्स आ जाते हैं जब दीपक इंटरस्टेट अगर सामान भेज रहे होते हैं, या कोलैबोरेटिव टूल्स जो सप्लाई चेन में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इवेंचुअली एक आपका हब होगा, हब के बाद फिर आपका जो एंड कंज्यूमर है, वो पूरी जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, सबका कंप्लेन करने का तरीका अलग है। तो इन दोनों ही केसेस में एक जो चीज मुझे समझ में आ रही है, दैट इज कि वी नीड टू हैव द कम्युनिकेशन नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड फर्स्ट. So the first point that I would put forth is ki how do we resolve this is you streamline the communication. And when you say streamline the communication, you mean that you bring all the communication on a single platform for, let's say, telephony, of course, जो calls आ रही हैं, WhatsApp, as you mentioned, SMS, because supply chain में क्या होता है, जैसे drivers हैं, बहुत सारी जगहों पे वो लोग they use their personal phones, their personal WhatsApp, डिलीवरी करने से पहले एजेंट फोन कर लेता है. तो द बिगर प्लेयर्स हैव सॉल्व्ड अस, वी हैव हेल्प्ड देम सॉल्व इट, कि हाउ डू यू प्रोबेबली मैनेज द लास्ट माइल डिलीवरी. लेट्स से आपका कभी जोमेटो से अगर फोन आता होगा या Amazon से फोन आता होगा, so there is a solution called call masking that is deployed there. You are not able to see what the delivery guy's number is, and the delivery guy is not able to see yours. So there's a certain level of privacy that is maintained. Correct. So that is one aspect that logistics find. On similar lines, if I say, मतलब properly अगर मैं sum up करूं तो पहला जैसे मैंने बोला कि streamline करना है communication, we bring it on a single channel, we understand the industry per se, the use case would be for specific industry. मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कॉल्स रिसीव कर रहे हैं या जो व्हाट्सएप रिसीव कर रहे हैं, SMS receive कर रहे हैं, there has to be a cohesive platform and transparency at every level. So if Arpan wants to understand what was the conversation that was there between his sales agent and the purchase manager of X company, he is able to navigate and listen to that conversation easily. उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. If let's say एक डील हाथ से चली गई and he wants to do the due diligence, so he is able to get that data on which he can operate, जो कि otherwise जो broken systems हैं या जो disintegrated systems है उसमें कोई अपने फोन से कर रहा है, कोई WhatsApp अपने फोन पे चल रहा है, और यूजुअली ये बहुत कॉमन है. हर कोई व्हाट्सएप तो अभी कोई, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआईज का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत पुअर है, तो बिजनेसेस ने उतना फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट भी नहीं किया है. तो पीपल आर यूजिंग देयर पर्सनल व्हाट्सएप. एक बार कॉल करते हैं, फोन कोई नहीं उठाता है तो पर्सनल व्हाट्सएप से पिंग कर देते हैं, एंड देन द कन्वर्सेशन फ्रॉम अ बिजनेस लाइन मूव्स टू द पर्सनल लाइन, एंड एब्सोल्युटली जीरो विजिबिलिटी एट द पार्ट ऑफ द ओनर और द डिसीजन मेकर्स की हो क्या रहा है. तो मैन्युफैक्चरिंग का वो एक यूज केस दिखता है. दूसरा यूज केस दिखता है ऑटोमेशन का, जो कि दोनों जगह हो सकता है. There's a lot of work where you don't actually need a receptionist. The call goes and it says, welcome to Gibraltar. Who would you like to speak to? The sales team or the service team? Press 1 for Hindi, press 2 for English, press 3 for Bengali, whatever. So that kind of multi-level IVRs help navigate and helps the company stand out as a professional organization, as Arpan was mentioning. And then when you bring in automation, बहुत सारी चीजें, the larger part of the manual processes gets eroded. You do not need a receptionist using an EPBX कि ये बटन दबाओ तो इधर कॉल जाएगी, ये बटन दबाओ तो उधर कॉल जाएगी. वो प्रोसेस ही पूरा एलिमिनेट हो गया. It's kind of a digital receptionist for you, and be it call routing or let's say setting appointments, that can be automated.
you can automatically set up the appointment without intervention of both the person who wants an appointment and the person that needs to give the appointment. And उसके अलावा response bots हैं काफी सारे कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. देर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्स बॉट. व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग बॉट्स बना देते हैं कि आपका कस्टमर सर्विस का एक ये बेसिक बॉट है. व्हाट आर योर वर्क टाइमिंग्स, वेयर इज योर ऑफिस लोकेशन. So you can just these are the questions, common questions that people ask on WhatsApp, and they get the response. So if you've probably seen some of the manufacturing companies, like Panasonic is a very good example. They have reduced their call center size from around approximately 200 people to 25-30 people. And the reason is now they have got a centralized WhatsApp number wherein you can go, you can put in your information. You will say hi. They will ask you what is the product you are using. Are you seeking information for sales or service? You will say service. What for what? Refrigerator, washing machine, or something else. You would say, let's say air conditioner. Air conditioner mein, they will tell you what are the models that you are using. If your number is registered, they'll fetch it from their database and they'll tell you that there are 3 air conditioners of Panasonic at your place, and which one do you want to go for service? Do you want a service or a spare or a repair? In that detail they go, and they will drill it down till the time they will generate the service receipt on WhatsApp itself. They will fix an appointment with the person for the next day. You can download that receipt. You can give it to the service agent. The boss, this is there, and the person would come, and there is zero manual intervention. So that is the level of automation that can be brought in. And similarly, supply chain में भी बहुत सारी जगहों पे automations आ जाते हैं. For example, लास्ट माइल डिलीवरी में अगर आपको किसी के घर पे डिलीवरी देने जाना है, जो डिलीवरी बंदा है वो पहुंचता है, घंटी बजाता है, अगला बंदा बोलता है कि सर मैं तो ऑफिस चला गया, या मैं व्हाटएवर बच्चे को पिक करने आ गया. नाउ व्हाट डू दैट गाय डू? सो प्रोबेबली वी कैन मैनेज दिस जर्नी अ बिट, एंड द डिलीवरी गाय नोज बिफोर हैंड कि जो ये हमारे C51 वाले सर हैं जिनके यहाँ डिलीवरी करनी है, ही वुड नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम let's say 3 to 4 p.m. because he needs to go and pick his children from the school. तो वो 4 बजे के बाद ही आएगा ना. दोनों की रिसोर्सेज बचेंगे, टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा, एनवायरनमेंट सेव होगा. सो दैट इज द ऑटोमेशन पार्ट. और थर्ड पार्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से अर्पण के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज रियल टाइम एनालिटिक्स, रियल टाइम विजिबिलिटी. इनफैक्ट विजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि दीपक वुड वांट टू सी, जैसे आप ट्रैक होते देखते हैं अभी कि मेरा पैकेज कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पहुंचा कि यहाँ पहुंचा कि यहाँ पहुंचा. बट बिजनेसेस ऑल्सो वांट टू सी एक्चुअली में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है. वो पैकेज वहां पे पहुंचा, व्हाट इज द कन्वर्सेशन दैट दिस ट्रक वाला हैड, ही हैड टू रीच देयर. जो वहां पे नहीं पहुंच रहा है तो बात कैसे हो रही है, जो लोकल एजेंट है, हाउ इज ही टॉकिंग. Abhi, we implemented this for one of the cement companies based in West Bengal only, and it's a solution called corporate line, MyOperator corporate line, wherein everybody is given a mobile-based virtual number. It's sort of a corporate SIM card without the SIM card. It's a seamless mobility solution, and all the people in that trucking region, all the truckers of that organization are given a number, given different numbers which are virtual numbers. And every conversation that they are having is being recorded and tracked. उसमें एनालिटिक्स भी मिल रही है कि कितनी देर की कन्वर्सेशन हो रही है ट्रक वाले से. उसमें आपको विजिबिलिटी भी मिल रही है. आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि वहां पे ना देयर इज अ लॉट ऑफ पिल्फरेज आल्सो दैट इज हैपनिंग. उनका यूज केस पिल्फरेज का था. So you get to understand the whole dynamics once you start tracking the conversations. You start track quality purpose के लिए, compliance purpose के लिए. So probably I think these are the 3 important areas. You streamline their communication, you automate the communication part as much as possible, and then you see it in real time. ये एक broad industries को लेके मैंने देने But I की think कोशिश you've की. covered, I mean, broadly maybe you have already covered, I think, almost every aspect. Before I like even ask Arpan and Deepak to tell their own personal experiences with something like MyOperator की implementation के बाद what changes they have seen. I have this one question that was in my mind.
जब ये webinar we decided to do, कि when Arpan will be in front of me, I'll ask, कि Arpan, what do you think is one of the major differences? We have been across the nations and whatnot. कि when you're talking B2B or manufacturing is, I think 100% मोटा मोटा B2B only. Manufacturing is like, I think very few people are going to a factory to buy something directly. Most of them are B2B clients only. ठीक है, so वहां पे, and add to manufacturing of industrial products, how does communication change, and what is that basic aspect that people or business owners need to understand about this B2B industrial communication, जो normal B2C sales इन सब चीजों से different है? Okay, see, I'll answer it this way. Difference तो बहुत है. सबसे बड़ा बात है कि when B2C communication होता है, then it is lot more personalized. सर आप कैसे हो, आपको ये चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, and a lot of these. When it comes to, you know, B2B, it's a lot more legal. It's a lot more legal. Every word you speak, every offer you make, every email or even WhatsApp that you shoot out can be challenged in the court of law. But when it comes to B2C, आप कितने बार मार्केट में जाके अंडा खरीदने के बाद में उसका वारंटी क्लेम करने के लिए कोर्ट गए हो भाई? अब तो गए नहीं हुए. So अगर देखेंगे तो हम जैसे प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, इनका हर एक जो चैनल पार्टनर होता है, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हो या मेरा OEM कस्टमर हो, कुछ भी हो, इनके साथ में जो कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत सोच समझ के किया जाता है, so that there is no way हमारे तरफ से कुछ भी ऐसे निकलना जाए जिससे कि बाद में जाके हमको कोई लीगल एस्पेक्ट्स में हम फंस जाए. So that is one big aspect. Secondly, you know, B2C में there are a lot more flexibilities in regards to informal communication. B2B में it's lot more formal way of communication. B2B में आपको formally communicate करना है, and इसके बावजूद मैं आपको बताऊं क्या होता है. Generally sellers try to be as formal as possible in general, but when it comes to buyers, and when especially Shivam very rightly pointed out about वो formal communication से you know sudden shift to in you know personal communication, मतलब वो देखा यहाँ से बात नहीं हो रहा है तो WhatsApp में हाई कर दिया, पिंग कर दिया, and WhatsApp चालू हो गया. So वो formal से informal channel of communication पे उतर गए. ये बहुत अच्छा है एक जोन तक. बाद में हम लोगों को फंसना पड़ता है, हम लोगों को भुगतना पड़ता है when you know most, I mean I am somebody who is being reported by two ladies who are my sales managers for two different verticals. So these young beautiful ladies, they are duly educated and they have their due experience, and that's why they're sitting in the chair, not because they are beautiful lady. But what happens when they are communicating with the customer? काफी टाइम वो WhatsApp में कस्टमर के साथ ऑनलाइन बात हो गया उनका. कस्टमर अगर मान लीजिए मोस्टली ये होता है मैकेनिक लेवल पे होता है, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स लोग का मैकेनिक लोग जो होते हैं, they would look at the DP and then say hi, good night madam, good morning madam, आप क्या खाए हो, आपका लंच हुआ है क्या, तो ये क्वेश्चंस चालू हो जाता है. That's a very typical problem. That's not an Indian problem. That's a typical problem with you know, we male customers possibly. I don't know. I won't generalize it. I'm sorry, but this is what my girls face. So when I converted this entire channel of communication to MyOperator, we kind of got a relief कि भाई communication का जो channel है
इससे होने से there is a clearer understanding and traceability, as Shivam very rightly said about the recording purpose, the recording aspect of MyOperator. बाद में जाके I have seen there has been cases where mechanic says something ulta pulta रात को 11 बजे phone करके to one of my lady coordinators, and it's all recorded. Next day morning, when my some other team called him up and said कि भाई आपको ये सब बोलना नहीं चाहिए था, you should not be saying all these, and हम तो कुछ बोले ही नहीं. ये अलग बात है, वो तब कोई दूसरा जोन पे थे तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आया वो क्या बोले हैं, but that's not my lookout. All I had was an audio clip which my guy sent it across to him and said भाई आपने ये बोले थे, ये आपको बोलना नहीं चाहिए. So you are dealing with a company, let's be in our professional lines. And it's not just the mechanics, I'll tell you. I have seen instances when good, I would say quite enlightened executives have lost their, so-called grace during the, night time, especially in the weekends. And they try to, communicate with my lady team, and they spread whatsoever they're Go not all over the supposed place, to. yeah. So then that becomes very easy for us कि भाई next दिन इनको एक बार खाली ऑडियो क्लिप भेज दिया ना, तो यार पेमेंट का बात कहना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाता है, ऑर्डर भी आ गया. ऐसा भी हुआ है. तो ये I'm not saying कि this is to be used as a tool for blackmailing my customer, but ये हो जाता है यार. So this is what it is. But this is good that you have these systems in place in industries where again things don't come out very openly, right? I mean, somebody, you mentioned Shopper Stop earlier, so no offense to them, but if I go to Shopper Stop and I don't like somebody's behavior, I can be very vocal about it. मैं वहीं खड़े होके लड़ाई कर लूंगा, और I can go back home, मैं X पे जाके type कर दूंगा, या I'll go on LinkedIn and blast the entire company over, and that poor person, in whatever state he or she may have been, will eventually probably end up getting a scolding or even losing a job. Does not happen in industrial things, because these are not very out in the open. Yeah. Nobody talks about it. Nobody asks कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, because people are like, oh, you are into like air spring manufacturing. We don't even see real springs. Correct. Air springs, तो we don't even talk उनका about. बात है. हाँ. Correct. So that is where I think these tools definitely help. So I'll quickly now, Arpan, thank you. This was very insightful. I'm pretty sure for a lot of people. So I'll now quickly go to the last part of my questioning, and then we'll move on to the questions by the audience. Ki, for you, when you implemented MyOperator, what has changed since then, and how has your experience been with the cloud telephony solutions of MyOperator? You are asking me? Yes. Okay, sorry. See, it changed a lot. The first, precisely to talk about it, firstly, as I spoke, there is no, the requirement of having a receptionist went zero. Accountability of whatever my guys are speaking and whatever my customer is speaking is on the highest of the sides, because it is recordable and it is traceable. Even previously I used to hear stories wherein, मैं सुबह को ऑफिस देर से आया क्योंकि ऑफिस आने वाले बाइक में चढ़ ही रहे थे कि इतना सारा कस्टमर का कॉल आ गया. Now I've made it mandatory to all my sales team all over India. I have my sales team spread all over India. So I've made it mandatory. All your incoming and outgoing calls should be conducted through MyOperator's, the channel number that we have. I'm not saying that 100% of it is executed. There is still a lot of room for improvement, but mota, the major chunk has been converted. So when he says that, I always say, yaar, yahan par dikh to nahi raha hai, because I have the app in my mobile. So यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है. And now they are like, okay, ठीक है यार, अभी जो भी बोलेंगे थोड़ा सोच समझ के बोलना है. That's point number 2. Now when it comes to point number 3,
it's very, very easy to operate. You don't have to be an engineer to figure out एक IVR को लेके आप ये कैसे आप वर्चुअल टेलीफोनी पे आप काम करोगे वगैरह, आपको कुछ भी इतना सोचना नहीं है, वो सिंपल सा है, वो बच्चा भी कर लेगा. Because I have to deal with a lot of people who are not trained to that extent, I would say. Now, fourth one is, whenever I get call, wherever I get call, nothing gets unanswered. And in case मेरा 3 लेयर पे दिया हुआ है, अगर तीनों का तीनों लेयर अगर एब्सेंट भी है, तो मेरे पास पूरा डेटा आ जाता है, and we get to call them back. And we analyze on a month on, this is a very important point, the last point possibly from my side, we do analyze the calls. Like call मेरे पास last month में कितना आया था, because this number is specified in my website, this number is specified in my product का जो warranty card होता है, invoice होता है, even in our what do you call, letterhead, business card, everywhere we use this number, and we have made it routine कि every month we tally इसका analytics में जाके कि भाई इसमें इस month को क्या हो रहा था, अगला month को क्या हो रहा है. The entire analytics, the reports are extremely helpful. I don't know if you guys can see it or not. ये जो report है, इससे हम लोग समझ जाते हैं कि भाई इस टाइम में ज्यादा कॉल आ रहा है, इस टाइम में कम. So we have kind of allocated our shifts based on कि भाई कब क्या होने से better रहेगा. That's what and the cost that we are paying to my operator, and I'm sure nobody is going to increase my bill after hearing this, but trust me, especially Shivam. But trust me, what we are paying is possibly a fraction of what I would be paying to my real operator. So my receptionist, per to say, I don't need to, because here it's a very nominal fees that we are paying. We know what to expect, and every year appraisal में भी हमारे पास नहीं आता है हमारा बढ़ा दीजिए, ठीक है. So thank you guys. So no human resource problems is, I think, one more USP, Shivam, that you can always talk about going forward. And courtesy Arpan here, कि किसी को भी चाहिए हो तो Arpan can, we have his word कि there is no human resource problem, or at least we are solving that at some level. Great, thanks so much, Arpan, for that very incisive information around how does it help you. I'll come to Deepak and then take these questions. Ki Deepak, for LocoNav, because you are taking care of customer success, what improvements do you see with MyOperator, and how has your experience been of using MyOperator's telephony solutions? Yes, Sanat. MyOperator कई चीज़ों में कई चीज़ों में बहुत अच्छा है कि जब हम कॉल, हमारा एक टीम बैठती है जब किसी कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए किसी भी कंपनी में, तो जो लोकल का एक्सपीरियंस है MyOperator जो मैं हैंडल कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको पता होता है कि कब कॉल किस क्यू में ज़्यादा आ रही है. हमारे पास वेरियस क्यूज होती हैं वहाँ पे, सेल्स की अलग है, रिन्यूअल्स की अलग है, एंड IBC से अलग होती है. तो वो क्यूज आप सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. उसके देन किस क्यू में कितनी कॉल्स आती हैं और किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा कॉल फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैन पावर को शेड्यूल कर सकते हैं. ओके, सो उससे एक चैलेंज जो आता है ना, मतलब मैंने अगर लास्ट वीक अपना रिपोर्ट चेक किया कि लास्ट वीक में कोई अपर मैनेजमेंट से आया, मुझे दिखाइए आप लास्ट वीक में कितनी कॉल्स हमारी सेल्स क्यू में आई थी और उनमें से कितनी मैच्योर हुई है. हमने सेल्स कॉल पे कर ली, दैट्स इनफ. सो उसके बाद हमने जब सेल्स टीम को कॉल्स हैंड ओवर की थी, उसमें से कितनी मैच्योर हुई है एक्चुअल में. अब जो सेल्स पर्सन उन्होंने बोल दिया कि हमने इतना % रेशियो में ये कॉल्स मैच्योर कर लिए, पर एक्चुअल में क्या वो मैच्योर हुई थी या नहीं हुई थी, क्या एक्चुअल में वो सेल्स क्यू में आई थी या नहीं आई थी, उसको हम फिल्टर करके वो हम डेटा बेस बना के उसको सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास एक्चुअल में नंबर ऑफ काउंट ये था और मैच्योर % ये था. तो उसमें कहीं भी
यू नो कोई भी एक उसको उसमें शैडो में नहीं रख सकता है कि आप मैंने मेरे पास जो कॉल आया था, जो डेटा आप सामने से आया था, वो मैंने इतने परसेंट मैच्योर किया, इतना नहीं किया। एक्चुअल डेटा अकाउंट आपके पास होगा, आप उस पर मतलब बात कर सकते हैं बैठ के। और ये जो बिजनेस बिजनेस थिंग्स के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही बेहतर है कि आप जो बिजनेस को लेके आप जो माई ऑपरेटर से जो हेल्प ले सकते हैं, वो एक एक्चुअल नंबर होता है, वो कोई बनावटी नंबर नहीं होता है, वो एक एक्चुअल नंबर है। एंड सेकंड ऐसी है कि जो कस्टमर जिस प्रॉब्लम के लिए कॉल करता है, सपोज कोई प्रोडक्ट को लेके कॉल करता है, कोई सॉफ्टवेयर इशू के लेके कॉल करता है, कोई कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके कॉल करता है कि मैं कॉल कर सपोज मैंने कॉल किया कि मेरा सॉफ्टवेयर इतने टाइम से मेरी प्रॉब्लम है, डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो कि नहीं है सॉल्व हो रहा है। सपोज एक बग क्रिएट हुआ एक कंपनी एंड पे, और वो पिछले 2 से 3 दिन कंटिन्यू चला। अब मुझे देखना है कि अब लास्ट मंथ एक बग क्रिएट हुआ था, उसमें उस टेनर में कितनी कॉल्स रिसीव हुई थी उस बग के कोडिंग सो उससे होता क्या है कि एक तो जो नंबर ऑफ टिकट्स होता है हम जब कॉल स्पीक करते हैं उस पर टिकट्स पे भी काम करते हैं, जो उसमें एक रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत ही एक ही होता है कि आप जब कॉल रिकॉर्ड में एक टिकट्स होती है ना, तो मेरे उस कंसर्न के लिए कितनी टिकट रिसीव थी उस कॉल्स की जो कॉल्स आई थी उस टाइम में। तो वो हम किसी भी बग को रिजोल्यूशन करने के बाद जब ये रिसीव निकालते हैं ना कि कौन सा बग कितने टाइम में रिजोल्यूशन किया गया था टेक टीम की साइड से, और कितने टाइम बाद हमने ये रिजॉल्व कर दिया था, और कितने नंबर ऑफ काउंट मतलब जो टिकट्स बनी थी या कॉल्स आई थी उसका रिसीव किया था। तो ये बड़ा हेल्पफुल टूल है इस चीज को लेके। Which makes sense. I think this part that overall is very common from everything जो आप तीनों लोगों ने बोला, वो निकल के आता है कि यार डेटा जो है ना, ये एंड ऑफ द पावर ऑफ डेटा, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग का हो या वो स्टैट्स का हो या रिपोर्ट्स का हो, दैट इज इमेंस, एंड दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज वर्थ way more than you will ever pay for a MyOperator like service. Not just even saying MyOperator to endorse, but anything MyOperator like. You would initially feel कि यार I would have got a number for like 100 200 rupees, but then why MyOperator? When you start using it, that is where you realize कि अरे यार इससे तो ये डेटा निकल सकता है. Very recently I was talking to my own manager and I asked her कि you have been telling us talk data, but what is data? तो शी सेड कि सी डेटा इज नॉट कि ओके आपने मुझे बता दिया दिन में इतनी कॉल आई. डेटा इज व्हाट यू ड्रॉ आउट ऑफ दैट, कि संडेज को इतनी कॉल आती है, मंडेज को कम आती है, ट्यूसडेज को फिर ज्यादा आती है. सो हाउ डू यू मैनेज योर वर्क फोर्स ऑन मंडेज एंड ट्यूसडेज एंड वेंसडेज is why data is important. Just having that information कि आज मेरे पास 10 मिस कॉल थी doesn't help you at all. So I think that is where data is the key, and with something like my operator you have that control. डेली आपको दिखता है, हर टाइम आपको दिखता है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, एंड डेटा नेवर लाइज, जस्ट लाइक स्टॉप वॉचेस डोंट लाई, डेटा नेवर lies. Yeah, I'll give an analogy and then move to the questions. कि I recently told somebody, they asked me कि sir इतना क्या difference है. There is also a product that we have called Heophone that is meant for SMBs and smaller consumption. So they asked कि sir इतना क्या difference है my operator में, that there is a cost difference also. You are saying it is enterprise level and everything. I said sir क्या है ना, you have this sunroof in a car. In a Volvo car, you have sunroof and a lot of features and 6 airbags and whatnot. And then you have a regular car like Ignis. I have one. आपके पास सनरूफ नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप चला रहे हो ना गाड़ी, गाड़ी तो गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. But then when you have a sunroof, you also open it, you enjoy the view, you click those photos. When you have a Volvo, you drive like at 150 wherever there is possible, and you don't care कि पता है यार लड़ेंगे तो दीवार ही टूटेगी, गाड़ी फिर भी सलामत है. With an Ignis, you don't do that. With a Ignis car, you drive at 40, stay safe, don't take risk. फीचर होगा तो इस्तेमाल करेंगे, फील कर पाएंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं. जो नहीं होगा तो देन तो यू आर एनीवेज कूल. Cool. So enough of talking from my side, though I have few questions that have come up while people were signing up. We gave them an option कि कुछ questions हैं आप तो पूछ सकते हैं, which we can take up towards the end. And we have a couple of questions here also. So जो starting में ही in fact पूछे गए थे. So first one is from Abhishek. Does this app provide AI call and live chat services? I think Shivam, you can answer this. Does my operator provide AI call and live chat services? So AI call is a very broad term. Uh,
अभी तो कॉलिंग मैकेनिज्म है, बट देर आर सर्टेन AI developments that are happening. We can automate it to certain level using multi-level IVRs. It's not a full-fledged AI call at this point of time. There are OBDs, in fact, that we offer, and these are dynamic OBDs. I can explain that because I believe that is what could solve Abhishek's problem rather than the AI call. So what an outbound dialer or a voice broadcast is, you might have heard a pre-recorded voice call from a lot of politicians telling them मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ या आई एम प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीकिंग. So these kinds of things are possible, and the AI part is not there, but there is dynamic part involved. So probably if Arpan would receive a call, it would say, "Hi Arpan, I am, let's say, Mamta Banerjee speaking, and in your particular constituency, with the name of the constituency, we have this particular candidate who's coming up." So you can customize it to, let's say, 10, 12 different variables, and that solves a lot of problem. AI अभी बहुत niche है, अभी required. In case कोई use case है, we would be happy to understand the use case and understand how do we want to solve that. Live chat services, of course, we do. We do that. Fair enough. I think Abhishek also has one more question कि क्या ये सब जो आप चीजें बता रहे हैं, ये वेब होस्टिंग एंड सर्वर मैनेजमेंट, I think that is also again lesser talked about thing. Web hosting is still known, server management is less. कि क्या ये वेब होस्टिंग और सर्वर मैनेजमेंट बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल होगा? IT businesses में तो usually use होता ही है. We have around approximately 13% of the customers are from IT. Out of the 12,000 customers, we have 13% customers coming from IT. And the reason is that there's a lot of frequent hopping happening. तो कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है आपका, यू डू नॉट हैव दैट. एंड व्हेन द कस्टमर इज एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है, उसका 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है, 25 दिन वो वापस नहीं आता है, आखिरी के 5 दिन में आके कुछ भी समझा के चला जाता है. सो to understand the requirement, the person who's assigned the case, the knowledge transfer हुआ, he goes back and listens to the recordings, what was the actual understanding कि चाहिए क्या था कस्टमर को. तो वहां पे बहुत यूज होता है. एंड उसके अलावा कंप्लायंस के भी काफी सारे इश्यूज होते हैं. सो इफ यू आर डीलिंग विथ लेट्स से web hosting or server management for fintechs or for जो आपके stock broking agencies हैं, so there's a RBI compliance wherein they need to have pre-recorded call lines. उनको जितनी भी conversations होंगी they have to be mandatorily recorded. तो काफी सारे यूज केसेस बनते हैं. तो ब्रॉडली यूज तो होता ही है. स्पेसिफिक यूज केसेस होंगे तो we'll be able to हर इंडस्ट्री में ही understand. है यूसेज, आई बिलीव. यूसेज तो है. Okay, cool. So we have one question from SAI Goa. Is a very generic question though, how to increase business, but I think it's because we are in the manufacturing industry ka session. I think Arpan, you can give a few quick insights of your 2 decades of experience. Ki how to grow a manufacturing business at large. For any business, the most critical part is customer. If customer comes, बाकी सब चीज लाइन अप, वो कायनात जुड़ जाते हैं आपको बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए. So that is definitely. So to get a customer and to get repeat customers, you have to have the experience in place. अच्छा experience customer के लिए important है, आपके business के लिए important है. To increase customers coming to your business, all I can tell you in a very generic way, आज का तारीख में online advertisements, social media advertisements, and all of these, very dirt cheap, I won't say, but सस्ता में आपको इतना सारा zones में cater, geographically can select. That we have done. I was sitting home in COVID, so, and I was having COVID at that point of time, and मैं रूम में बैठ के सोच रहा था कि इटालियन मार्केट में क्यों ना हम काम करें. I learned whatever little कैसे काम करते हैं ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग.
and with a boring industrial product what we are manufacturing, I organize कि फेसबुक में शायद ही कोई हम जैसे होंगे कि जो फेसबुक में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचने चले। तो मैं उस टाइम बैठ के सोचा यार जो हम भी बैठ के फेसबुक देख रहे हैं तो जो बंदा हमसे खरीदेगा वो भी तो फेसबुक ही देख रहे होंगे। तो मैं घूम फिर के आई वेंट कि इटालियन टेरिटोरी को मार्किंग किया, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन लगाया, कुछ 20-25,000 का खर्चा किया बजट देके फॉर अ कैंपेन ऑफ मे बी 3 days 4 days। इट रैन क्वाइट वेल एंड उससे जो लीड जनरेट हुआ उस लीड को लेके मैं मेरा टीम को भेज दिया एंड विद द हेल्प ऑफ माय ऑपरेटर दे स्टार्टेड कॉलिंग। करेक्ट। एंड उससे आई गॉट एन इनसाइट कि भाई मेरे पास शायद 2200 लीड्स आया था विद इन अ स्पैन ऑफ 5 days। उनमें से हाँ ये बात अलग है कि उनमें से 5 ही कन्वर्ट हुआ है। Right. But trust me, 5 conversion for a company of our size is huge. Correct. It's a long-term thing. So it happened, and I could figure out कि शायद और 5 हो भी सकता था additional, जो हुआ नहीं है क्योंकि हमारे टीम के whatever communication they were having वो थोड़ा और भी better हो सकता था। Correct. Language should have been, selection of words should have been better. The way they communicate should have been better. This, that, and those. Again, thanks to my operator, I could figure it out बाद में जाके कि हाँ, see at the end of the day, just to answer it broadly, you know, feedback system is the name of the game. So for every act that we do, if we are open to take the feedback, then it solves 50% of the problem. And having, you know, an IVR system of this kind, it automatically allows you to get a lot of feedback. Analytics is a very broad word. क्या है feedback से हमको पता चलता है कि यार इसमें हमने क्या गलती किए हैं, वहां पर हम कितना सुधार कर सकते हैं, and आगे जाके how to take it forward and make it better. Correct. So that is actually a very broad question, but yeah, still comparatively niche answer. Okay, so next question that I got from the form is this is for you, Shubham. Should we have separate numbers for sending transactional and promotional messages? I think this is for WhatsApp. So, see, Meta has a policy to block your number in case it reaches the spam limit that they have set internally. So there are 3 degrees on which Meta rates your account performance on the spam rating. So what we usually advise is to have 2 separate numbers. So all the promotional messages that you are sending, that needs to be sent from a different number so that in case that particular number gets blocked by Meta, you at least have your transactional number, which is the channel that you would put on your website, that you would probably advertise in newspapers, that you would put on hoardings, and people would themselves reach out to you on that particular number. So it's kind of your helpline number. So transactional number is kind of your helpline number. You don't want to lose that. You probably want to promote yourself and use a different number for that. Even if it gets shut down, you can get another one. But if your core helpline number gets shut down, so what happens is people store these numbers and they probably reach out to you 6 months or 1 year down the line whenever they are facing certain, they need your services or whatever their requirement may be at that point in time. So at least if that is not valid till then there's a loss of business that would affect. So it's a small price. I believe that's not a very hefty price, couple of thousand only. So Correct. it does not make sense to have one single number for both promotional and transaction. Makes sense. Check it. So my last question for the day for you guys is कि somebody asked, what are the steps should I take? And I rephrased it from a little broken English that I got. कि what are the steps should I take to be CX ready from an idea to IPO stage? Basically, what they mean to ask is at different stage of businesses, CX approach कैसा होना चाहिए? अलग होता है, same होना चाहिए? Arpan, if you want to take this first, and then maybe we can come to Shivam and Deepak. See,
the customer experience factor keeps changing as your business grows, because the profile of your customer essentially grows, the quantum of the customer that you handle essentially grows, and that's when idea से IPO तक का जो जर्नी है, इसमें शुरुआत में शायद आप 5 कस्टमर से बात कर रहे थे, and you were so, you know, pally and so informal इनके साथ में कि साथ में जाके आप बैठ के कॉफी भी पी लेंगे, बात भी कर लेंगे, हो जाता था. When the 5 customer went up to 50, आप सबसे मिल भी नहीं सकते हैं, आप इतना कॉफी भी नहीं पी सकते. Then all that you can do is इनको WhatsApp में वो good morning, good night, hi sir, how are you sir, चलता रहेगा. Out of 50, possibly 15 को आप मिल पाएंगे, साल में एक भी बार हो तो काफी है. When it goes to 500, then automatically you are not there in the picture. Then आपका virtual system takes place. वो आपका ऑटोमेटिकली जो रिसेप्शनिस्ट के जगह पे जो आपका माई ऑपरेटर का ऑटोमेटिक मैसेज है वहां पर आता है, वहां से मल्टी लेवल जहां पर जाना चाहिए वहां पर जाता है, एंड योर टीम स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विद देम. एंड व्हेन यू गो टू फ्रॉम 500 to 5,000 customers, then naturally your team is not your anymore. Then you possibly have a call center answering your calls, and वहां पर भी AI के जरिए, as Shivam was quite rightly speaking about, they are guiding the customer through and funneling you down to the absolutely pinpointed problem कि इस problem को अभी solve करते, इसके लिए आपको इससे बात करना है, कर करके वहां तक आ रहे हैं. So that funneling down approach takes place. So at the end of the day, it's all customer's experience. Customer experience के बिना तो कुछ नहीं है. तो इसी के कारण से it is not just customers, it all stakeholders. Like मेरा vendors, I get a lot of good vendors जो मेरा वेबसाइट देख के मेरा नंबर पे कॉल करके आ जाते हैं, और कॉल करके अगर मैं कोई यहाँ पर 5 बात करते हुए उनसे बात चालू करे ना, तो मेरा वेंडर भी सोचेगा कि ये क्या कंपनी है. वहां पर a professional, you know, speech to start with a, you know, artificial whatever format that you guys create makes a hell lot of difference in my vendor's mind also. So he feels comfortable कि हाँ भाई इनको अभी 30 दिन हम क्रेडिट दे सकते हैं. Correct. ये बड़ा important हो जाता है. Thank you. That is how it functions. Shivam, any closing words on this? Ki what Yeah, I think differences Arpan do they covered come it to? very beautifully. So the idea is that, so technically speaking, जब कंपनी छोटी होती है, आइडिया स्टेज पे होती है, कस्टमर्स कम होते हैं, so it's a more personalized interaction that you do. One-to-one interaction हो जाता है. The tools that you may require, so most of the tools are cloud-based now, be it WhatsApp or be it SMS platforms or your cloud telephony platforms, and they can scale from 1 user to 1 lakh users. So that's not a challenge. Platform बदलने की जरूरत नहीं है, but approaches within the platforms change हो जाती हैं. First, there is a one-to-one approach wherein you just are conversing on a personal level, but as things grow, you have, as Arpan was saying, 1,000 customers, then you would probably use a broadcasting service more than a regular one-to-one messaging. आपको हैप्पी दिवाली विश करना है कस्टमर को, यू वुड राइट समथिंग वेरी जेनरिक, डियर सर, hope you are doing good, I wish you a very happy Diwali, and the other person is also thinking, okay, he considers me. So sort of these people try to hack their way into creating personalization at scale. So वो एक लेवल तक जा पाता है, और उसके बाद फिर वो OBDs and the voice broadcast और WhatsApp broadcast they take up. उसमें ही होता है. It makes sense. I think this is what people have been looking for from this session. Very insightful in my understanding. अपन तो टोटल मार्केटिंग वाले, सो हमारे लिए तो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन वाले लोगों को सुनना इज लाइक once in a blue moon activity, which Arpan, thanks to you, and Deepak, thanks to you as well, we got a lot of insights as to how things function on your front. So if I am ever probably later in life working with a manufacturing owner, I always remember Arpan, सर ने कुछ तो बताया था कि ऐसे ऐसा चलता है. But You're thank you most so right. much, guys, once again for joining us for the evening. Thank you, audience, for waiting with us till the end for all the questions to be answered. You will get these recordings soon enough in your inboxes. And until the next time,
time. I'll see you. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. Okay, thank you.